सर अगला सवाल जो है वो ये है कि अलनाफी जो है बहुत यूनिक है एक एस्पेक्ट के अंदर। एक तो नाम इसका अलनाफी है और दूसरा ये है कि जॉब ऑफर करती है अल-रज़ाक प्रोग्राम के तहत। क्या अल-रज़ाक प्रोग्राम जो है वो इमिग्रेशन में कोई हेल्प करता है या स्टूडेंट वीजे में या कंसल्टेशन के अंदर या सिर्फ और सिर्फ प्योरली जॉब के ऊपर सारा बेस है? अल-रज़ाक प्रोग्राम के बहुत सारे फीचर्स हैं। अल-रज़ाक प्रोग्राम की सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप किसी भी कंट्री से हैं, फ्रॉम विच एवर कंट्री यू बिलोंग टू, इट हैज सर्टेन रिक्वायरमेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड अल-रज़ाक। सम ऑफ द की रिक्वायरमेंट्स ऑफ अल-रज़ाक आर दैट जो आपको मीट करनी है वो कि आप ना बेसिकली प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करें। अगर आप लेवल 3 में हैं, लेवल 4 में है, 5 में, 6 में, 6 के लिए बाहर जाना आसान है। ठीक है ना, 6 को बाहर प्लेस करना आसान है बिकॉज 6 इज इक्वल टू बैचलर्स। लेवल 3, 4, 5 को आपकी अपनी कंट्री में हम प्लेस कर सकते हैं, वेर एवर यू आर, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी आप हैं। ठीक है, वहां हम आपको प्लेस कर सकते हैं, मगर आपने पूरा पार्ट 1 ऑफ द कोर्स करना है, एजुकॉल एग्जाम पार्ट 1, जो कि कोई भी एडमिशन ले, पूरी फीस पे करे, एग्जाम की फीस पे करे, पार्ट 1 एग्जाम निकाल सकता है। पार्ट 2 में उसको, ठीक है ना, क्योंकि वो सारे एमसीक्यूज हैं, पार्ट 2 में उसको 85% कोर्सेज कंप्लीट करने हैं हमसे, फिर हम उसको टॉपिक देंगे, वो टॉपिक के ऊपर असेसमेंट शुरू करेगा, अपना एक प्रेजेंटेशन इंटरव्यू देगा, एंड ही विल बी एबल टू पास दैट। इसमें लोग बच्चे पास भी हो रहे हैं, फेल भी हो रहे हैं। पार्ट 2 इज टफ, सो यू नीड टू पे अटेंशन, बट इफ यू वर्क हार्ड, यू इट्स इजियर फॉर यू। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट है लिंक्डइन का कोर्स। फिर इसके बाद चौथी रिक्वायरमेंट है लिंक्डइन का कोर्स आपने कंप्लीट करना है, तमाम लाइव क्लासेस में जाके बैठना है। फिर इसके बाद चौथी रिक्वायरमेंट्स हैं, दिस अ हैंडफुल ऑफ रिक्वायरमेंट्स। आपने कम्युनिकेशन का कोर्स करना है, यू हैव टू बाय द कम्युनिकेशन कोर्स फ्रॉम अस एंड यू हैव टू गेट इट डन। ठीक है, सो दीज आर ऑल द थिंग्स, ये सारी आपको करनी है। फिर इसके बाद आपको अल रज़ाक लैब्स, जैसे आप पार्ट 1 एग्जाम निकाल लेते हैं, तो आपने पार्ट 1 निकाल लिया तो आपको अल रज़ाक प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर कर दिया जाता है, देन यू हैव टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। आपको 20 लैब्स दी जाती हैं, यू हैव टू वर्क ऑन दोस 20 लैब्स। सो अगर आपने आरएचएल का कोर्स कंप्लीट किया या कोई भी कोर्स कंप्लीट किया, विल गिव यू लैब्स एज रिलेटेड टू दैट कोर्स, so you have to keep on doing that. Some of the labs will be given as is, some of the labs will be given as part of the Al-Razzaq. So there's a mix of labs you have to go through. Those labs will prepare you like for the real deal. कि तुम्हें क्या करना है. Now, depending on your location, if you meet all the requirements, एक साल के अंदर अंदर तुम्हें ये सारे काम करना है. You have to complete all the requirements. You have to write the blogs. You have to do a lot of things. ये सारी चीजें तुम्हें एक साल के अंदर करनी है. एक साल के अंदर वही आदमी कर सकता है जो रोजाना मिनिमम 3, मैक्सिमम 5 घंटे बैठ के पढ़े। 6 घंटे पढ़ता है, मर्जी उसकी, मैं रोक नहीं सकता। मिनिमम 3 आवर्स उसको मिनिमम रोजाना बैठ के पढ़ना है, चाहे वो किसी डिप्लोमा में भी हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो। ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी। सो अगर करता रहेगा, ही कैन डू इट। सो इफ ही गोज थ्रू ऑल ऑफ दोस रिक्वायरमेंट्स, देन अगर वो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, नेपाल से है, इनको इनकी कंट्रीज में हमारे हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी कंट्री में या इनको रिमोट जॉब दिलाएं। दिस इज ऑन अस, दिस इज पार्ट ऑफ अल रज़ाक। If they want to go outside to UK or to Europe or anywhere in Germany or North America for student visa guidance, we can provide them guidance, assist them with the work paper and all of those things. ठीक है ना? Writing recommendation letters, all of those things. We will assist all of those things. That's part of Al-Razzaq. But first you have to meet all the requirements. Once you meet all the requirements, then you are eligible for all of these services. You have to meet the requirements first. Then, ठीक है? So उसमें हम guidance कर सकते हैं. These country के students, जो developing countries इनको कहा जाता है, we can also place them in Middle East because it's easier. So if you're from Africa or from Asian countries, Asia Pacific, it's easier for us to place you in Middle East because the work permit scheme is easier. We just place you over there with our contacts. They do all the paperwork and everything for you, and they pay you, and then you start working for them. We are not getting paid by anyone, by the way. हम किसी से कोई पैसे नहीं ले, we're not charging anything. ठीक है ना? Not right now, because we want this program, ठीक है ना, to place at least 100,000 students, a million students before we can start say ठीक है. Because what we're doing is we are disrupting the market. हम free में उनको talent दे, that's what we're trying to do, right? We are disrupting the market because normally बंदों को place करने के पैसे लिए जाते हैं 3 to 4 month salary, ठीक है ना? तो उनकी सैलरी का इक्विवेलेंट लिया जाता है एज ए कमीशन. वी आर नॉट टेकिंग एनी कमीशन. दैट्स अनदर थिंग दैट वी डू, राइट? So we will place you there, you work for them, you do all of those things, but you have to pass the interview. So that's why जो अल रज़ाक की labs हैं will ensure
that you are ready for those roles, because those labs are designed as per the role. Okay? Now, when it comes to immigration, the best pathway of immigrating to European Union or to North America, when I say North America, not Mexico, but US and Canada, because all the Mexicans are going to US and Canada. So in the European NATO countries, I should say NATO countries. अगर तुम्हें किसी भी NATO countries में जाना है, we can assist you. And normally people go to US, Canada, UK, Germany, France, ठीक है ना, these big countries, Australia, New Zealand, all of these countries which has the biggest GDP, right? So ये उसमें जाते हैं. So because there are more opportunities there, so we will assist you. But the easiest pathway to go to these countries is student visa. So yes, we will help you with the student visa. Once you pass your degree, because degree is a requirement for those countries, it's an unfortunate requirement. You can get an admission in masters. So तुमने गए, तुमने complete किया, or once you have the work permit, we will assist you in securing employment there. Because of the Al-Razzaq virtue, you will get an opportunity. So for example, Taha or Sajjad or any of these students who are in Europe or wherever they are, and if they have completed all the courses, they met all the requirements, then we will place you through Al-Razzaq, basically, right? And that's where we connect with these companies, and we can send you there. So anyone can join, but they have to start the courses, they have to complete. There are certain levels you have to complete. So if you complete all the levels one by one, then we will place you there. That is our money back guarantee. So that is what we call money back guarantee. If you're not able to, you met all the requirements, you did everything, and you're not able to, and we are not able to find the job for you, whatever money you paid minus certain amount, you will get around 80% of it back. That's 80% of it back, right? We'll pay you back if you can't fulfill the requirements in 1 year. So 1 year it took you to complete the course. In the second year, it is our responsibility to basically send you there. And if we can't, then we return your money back. No one does that, right? Because no one has the confidence in what they're teaching to place you on the job. Alhamdulillah, we have the confidence, because what we're teaching you, when we enable you with all of these things and we start applying and give you the resume, when you start applying, you already find the job, right? And we start placing you and start sending you for the interviews. When we send you for the interviews, you're already prepared, because you already went through the hard parts anyway. So in the course, there's emotional intelligence, there is questions, there are HR related questions, there's a lot of things that you have to go through. In this world, no university does that. No one. The reason is the teachers who are teaching, they're all academic tigers, unfortunately. They're not coming from the industry. Most of them, 99% of them. It's a very bold statement to say that, but that is a reality. If you see any of your teacher, ask them, how many years did you work in the industry? What was your last title? They will say, I worked as an accountant, or I worked as an analyst or something, and then I left my job and went into teaching. Because anyone who comes into teaching, it's the most easiest way, basically entry into the university, into the job market. If you're very good with academics, then you can be a professor in the university. These professors, they have no vision of working in the industry and establishing companies. They're happy with 9-to-5 job, keep on pushing the pencils. They're happy with that. This is not something we do. This is not something. And all the professors we have who are teaching, they're all working in the industry right now. All working in the industry. So there's a big difference. So yes, we will assist you in all the immigration opportunities and all the student visa opportunities and placing you in the job in your country or as applicable outside. It all depends. The first requirements are you have to meet the requirements. If you meet the requirements, it is up to us to get you in.